Good morning, students. In our previous class, we have studied about what is earthquake, right? And some terms related to earthquake like hypocenter, epicenter, right? And today we are going to study about what are the causes of earthquake and what are the ill effects of earthquake, right? So, the very first we will study about seismology. What is seismology? The branch of science which deals with the study of earthquake is known as seismology, right? So it is similar to like study of microorganisms, right? Living organisms, that is called what? Biology, right? So like that, when we study about earthquake, that is called seismology, right? The next we have causes of earthquake. So what can be the causes of earthquake? The very first is volcanic eruptions. What is volcanic eruptions? When the magma which is present inside the earth, right, or lava, it oozes out, right? When it comes out, so uh, it causes what? It causes disturbance, right? It causes disturbance in the earth surface. So it may cause earthquake, right? The second is plate tectonics. Students, we know that our earth is made up of 9 plates, right? And so that's why there are 7 continents. ठीक है, वो प्लेट्स के बेसिस पर ही 7 continents को नेम दिए हैं, राइट? सो व्हाट हैपन, these plates sometimes as it floats, right, on the surface of water, so sometimes what happen, it starts dislocating, right, or may collapse, right? So whenever there is disturbance in the plates, it causes what? It causes earthquake, right? The third is anthropogenic factors. What is anthropogenic? Anthropogenic, it means it is man made factors, like which is due to the man. And you will think, right, man, how it is so, like sometimes when there is manufacturing of some like गुफा के अंदर कुछ बना रहे हैं या पहाड़ों में कुछ बना रहे, राइट? सो एट दैट टाइम व्हाट द पीपल डू, दे डू ब्लास्ट देयर, राइट? सो वहाँ पे ब्लास्ट करने से क्या हो सकता है, वहाँ के जो आसपास के सराउंडिंग्स है वहाँ पे जो है अर्थक्वेक आने के पॉसिबिलिटीज़ है, राइट? सो दिस इज एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, राइट, विच इज़ ड्यू टू ऑफ मैन, राइट? So the next we have folding and faulting. Folding and faulting means those factors, we will say some regions on this earth it becomes epicenter, right, or seismic origin, seismic zone we can say, जहाँ पे earthquake जो है आते ही रहता है. For example, we have Bhuj, we have Delhi. So these areas are what? These areas are seismic zone, right? So वहाँ पे वहाँ की जो surface है अंदर, तो वहाँ पे डिस्टर्बेंस होती रहती है, राइट? तो डिस्प्लेसमेंट होते रहता है रॉक्स का, तो बिकॉज ऑफ दैट इट बिकम्स द सिस्मिक और एरिया, है ना? सिस्मिक स्पेस बन चुका है, वो ज़्यादा प्रोन हो चुका है कि वहाँ पे अर्थक्वेक महीने में लाइक थोड़ा बहुत भी आते ही रहता है, राइट? सो दैट इज फोल्डिंग एंड faulting, right? And then next we have consequences of earthquake. So what are the consequences of earthquake? What are the ill effects of earthquake, we will say? The very first is building collapse. So due to earthquake, what happened? Building may get collapse. The second we have building knocked off their foundation. It means what? कि पूरा का पूरा बिल्डिंग ही अपनी बेस से जो है नॉक्ड ऑफ हो जाता है, राइट? उखड़ के गिर जाता है ना? The third we have landslides, right? In the mountain areas, right, you must have seen there are landslides, right? जहाँ पे पहाड़ों में क्या होता है, वहाँ पे अर्थक्वेक के कारण लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं, है ना? द नेक्स्ट वी हैव लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, राइट, ड्यू टू अर्थक्वेक, है ना? अगर अर्थक्वेक की रेंज जो है 7 से ज़्यादा है, राइट, वी हैव स्टडीड, राइट, दैट
on the Richter scale, earthquake is major, है ना. तो if there is earthquake at 1, अगर 1 पे होता है तो मतलब पता भी नहीं चलता. अगर 2 पे है तो थोड़ी सी शेकिंग होगी, है ना, हल्का सा पता चलेगा. 3 पे है तो थोड़ा उससे ज़्यादा, है ना. 4 है तो थोड़ा सा उससे भी ज़्यादा हमें शेकिंग होगा, है ना. और डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ एटम्स होगा इन द रूम अगर हम कहें बात. और 5th में थोड़ा उससे ज़्यादा होगा. 6th में मे बी थोड़ा सा डैमेज की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है. एंड 7 में उससे भी ज़्यादा. अगर मोर देन 7 है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि डैमेज ज़्यादा हो सकती है, राइट, टू द ह्यूमन लाइफ. लॉस टू ह्यूमन property. Next we have loss to human property. So whenever earthquake happens on the large scale, right, right, greater than 7, so what happen, it may cause the damage of human property, है ना. बिल्डिंग गिर गई तो उसके नीचे क्या होगा, कितना सामान लोगों का दब जाता है, टूट जाता है ना. उनके घर की फर्नीचर्स टूट गए, उनका सारा जो भी उन्होंने लाइक हम कह सकते हैं कि शौक से उन्होंने कुछ बनाया है वो सब क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है ड्यू टू अर्थक्वेक, राइट. So this is loss to human property. Then it also causes tsunamis, right. Tsunami is what, when there is earthquake in the ocean or river, right. So what happens, tide जो है जो ओशन की टाइड है वो क्या होती है, 60 मीटर हाइज जो है ऊपर जाती है, राइट. सो वो क्या करती हैं, कोस्टल एरियाज़ को इफ़ेक्ट करती है ना. जो भी वहाँ पे कोस्टल एरिया में रह रहे हैं उनको प्रॉब्लम क्रिएट करती है. उसके कारण क्या होता है, उन्हें खाना नहीं मिलता है ना, उन्हें रहने की प्रॉब्लम हो जाती है, उनका पूरा घर बह जाता है ना. सो दिस इज़ द consequences of earthquake, right. So the next we have flash floods. Flash floods means sometimes what happen due to earthquake, the dams, right, it get broken, है ना. और जो उसका पानी है वो पूरा पूरा क्या होता है, जो उसके सराउंडिंग्स में सिटीज़ हैं या कुछ उसमें आकर के सडनली सारा पानी उसमें चला जाता है ना. एंड अगर हम बात करें कि कोई टैंक है ना, उसमें पानी स्टोर करके रखा गया है और वो टूट जाता है ड्यू टू अर्थक्वेक. सो व्हाट हैपन्स, इट मे कॉज फ्लैश फ्लड्स, है ना. सडनली पानी पूरे उस एरिया में आ सकता है, राइट. द नेक्स्ट वी हैव राइज एंड सब्सिडेंस ऑफ ग्राउंड सरफेस. राइज एंड सब्सिडेंस ऑफ ग्राउंड सरफेस मीन्स जो हमने प्लेट्स की बात की थी तो क्या होगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, है ना. ठीक है, अर्थ सरफेस का तो वहाँ पे सिस्मिक जोन बन सकता है वो एरिया, है ना. सो वहाँ का जो सरफेस होगा, ग्राउंड सरफेस, वो इम्बैलेंस होने के कारण वहाँ पे लोग में भी उस जगह को छोड़ दें, है ना. सो वहाँ पे रहना छोड़ दें, है ना. सो दीज आर द इल इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, राइट क्लास. सो टुडे व्हाट वी हैव डिड causes of earthquake, है ना, and then consequences of earthquake. So class, that's all for today. We will meet in the next class. Okay, thank you.